Okay, so we were discussing about this. So there are certain points which are to be kept in mind when you are even going for these drop funds. So these are a little bit expensive because again, you will be getting some additional amount of return. So that is one of the reasons. And okay, then it's जो बाकी factors are like it is important to go through the entire doc once you are going for it finally, and then pay premiums for a fixed number of installments under the limited pay option. So that's there. So first assess your financial readiness. Taking a second home loan. So it's about financial readiness here means your credit worthiness. Are you like financially capable enough to go for a second loan? Like it can be for any type of loan. So that's there. You'll need to assess what are going to be the tax implications, how much again the EMIs and the burden would be there. So it's all of that. So workers' rights, working people, and in particular the union members, is the reason that anyone, whether you are a member of a union or not, get a weekend, get paid leave, get family leave if you get it. So we can take these three elements that these forms part of the workers' rights. You get a weekend, you are getting a paid leave, get family leave also. So this we've talked about. This is in the context of Bangladesh. Elections economy hangs in the balance. So the elections are important for India also from the perspective again national security. Secondly, economy, the trade relations, and so that's the balance. After 15 years of the Awami League rule, Bangladesh culture of election engineering has coincided with cronyism and institutionalized corruption. So these are the concerns. That's why we are even seeing violence being promoted by the opposition party in Bangladesh. So what So is an engineering here? like engineering, like purposefully things are being done. Culture of election engineering. So this is what do we mean by this actually. Purposeful things. So it's all about GDP. We talked about the concerns. Then letters to the editor, open invitation to inflation. So MSP as a tool tends to be blunted by overuse, and every government seeks to placate either the farmer or the consumer based on the electoral needs. So you can say that even MSP becomes a part of vote bank politics depending upon the condition of the market, or we can say the condition or the state of inflation. So here we also see that MSP, it impacts both the consumers and the producers. So we've discussed this thing before also, that what amount of MSP is important. It should be dependent upon that it is covering the increase in the cost of production for the farmers and the producers, and secondly, how much impact it would be having on the food inflation. So these two things needs to be balanced, and here it is talking the context of elections also. So that's how it is, we can say, even put forward in front of the people and the electors during the times of elections कि आप लोगों के लिए MSP इतना increase किया गया, farmers के लिए हमने इतना increase किया. So all of that. Okay, so RBI tightens the norms for the short term, the certificate, the CPs, the commercial papers, and NCDs. NCDs, non-convertible debentures. So we have discussed this in detail in the GS3 series, convertible and non-convertible debentures. We've talked about the difference also between the equities, the debentures, and the bonds also. So that is important for prelims also. So tightening of the norms for these, for the issuance of the short-term commercial papers. So short-term, Ashik, what do we mean by that these are short-term commercial papers? शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर एनसीडी तो मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर के अंदर दिया जाता है एक तरह से. Yes, okay. So it forms a part of money market because it is short-term. And so here it can be also for less than 7 days also, and or it can exceed a year as well. And the tenure, the time period for these non-convertible debentures cannot be less than 90 days or more than 1 year. So it would be somewhere between 90 days and 1 year.
These are certain facts here, you can go through them. And there was one question also about the convertible debentures in prelims, that you are getting less returns on the convertible debentures because when they are getting converted into equity shares, you have higher chances of getting more returns. So that's why the convertible debentures gives you less amount of interest rate, and we can say there are better chances of even covering up, or we can say the chances of indexation. Okay, now I think we can take up the Hindi newspaper. Divya. यस मानसी, यहाँ पर फरिश्ते दिल्ली गवर्नमेंट की योजना थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो गवर्नर है वो फंड को अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस योजना को रोकना पड़ गया। लेकिन जो गवर्नर है उनका कहना है कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, वो ही फंड को अलाउ करती है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की अपील की जाएगी तो उनके ऊपर जुर्माना लगाना पड़ेगा। इसके अंदर जो दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट होते थे उसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती थी और उन्हें निजी अस्पतालों में उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती थी। ये आदित्य L1 के रिगार्डिंग है कि जो डिस्टेंस देखते हैं हम पृथ्वी से कितना है, तो उसका 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर उसको स्थापित किया गया है, जिसे लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, जो कि अपने आसपास की हेलो कक्षाएं होती है जो उनके अंदर होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की कुल दूरी पर होता है। इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसमें जब अवधि की बात करते हैं तो त्रिआयामी कक्ष होते हैं, जिसके अंदर ये कक्षाएं मिलती है जहां पर लैग्रेंज पॉइंट फिक्स होता है। इसमें अगर लगातार उपग्रह एक जगह पर रुककर लगातार सूर्य को ऑब्जर्व कर सकता है कि किस तरह से वातावरण में चेंज आता है, किस तरह से उसकी जो गतिशील है वो कैसे चलती है, उसके अंदर गर्मी जो होती है उसका क्या कारण है, या जो सौर भूमक कोरण माइल इलेक्ट्रिशन है वो किस तरह से होता है, फिर इन सभी गतिविधियों के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके लिए इसको उस कक्ष में स्थापित किया गया है। तो उसके लिए जो प्रक्षेपण केंद्र आदित्य L1 के सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग है कि उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा और कितनी दूरी है और किस लिए किया गया है। ओके, तीस्ता पर चीन की दखल, यहाँ पर यह है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर विवाद रहता है, जिसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि जो 1973 से चला आ रहा है, जिसमें 1993 में इस जल के ऊपर एक संधि हुई थी कि 39 और 36% जल का बंटवारा किया जाएगा। उसके बाद 2009 में भी इसके रिगार्डिंग बात हुई थी, लेकिन उस पर समझौता नहीं हुआ। 2011 में समझौता हुआ था, लेकिन उसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि हम 60% जलनी चाहिए, हमें 80% जल चाहिए, इसलिए वो रुक गया था। तो उसके ऊपर अब जब हम देखते हैं कि चीन बोलता है कि हम तीस्ता नदी पर जलाशय बनाएंगे जिसकी वजह से बांग्लादेश विकसित होगा और उसकी एक सहायक परियोजना है। तो वहीं सिलीगुड़ी गलियारे के निकट इस परियोजना को बनाने की बात की गई, जो कि भारत के लिए आपत्तिजनक है। उस रिगार्डिंग कहा गया है कि किस तरह से नदी के जल को साफ रखा जाएगा, जलाशय को बना जाएगा और तटबंधन प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें देख सकते हैं कि जो भागीदारी होगी वो चीन की भागीदारी बढ़ जाएगी। जब हम भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की बात करते हैं तो 2800 वर्ग किलोमीटर की सीमा के बीच में ये नदी पूरे मैदानों से होती हुई बहती है। इसके अलावा जो और विवाद है, जो नदी का उद्गम स्थल है वो है सिक्किम राज्य से, जो अलग अलग ग्लेशियर के रूप में बहती है, लेकिन बाद में एक हो जाती, अलग अलग झरनों के रूप में बहती है, बाद में एक नदी के रूप में बनकर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश में एंटर करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो उसके ये कहा गया कि सबसे पहले जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था वो 1971 में हुआ था। उसके बाद से वो कंटिन्यूअस अब तक विवाद चलता ही आ रहा है, जिसके ऊपर कोई फिक्स नहीं हुआ है कि किस तरह का समझौता किया जाना चाहिए उसको रिगार्डिंग। अब जो बात की जा रही है वो करिए कि 65 से 70% तक का जो जल है वो किस तरह से बंटवारा किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर और जो इशू है वो ये होते हैं कि बांग्लादेश में आर्थिक कमजोरी की वजह से वहाँ जो
निरंतर घुसपैठ देखने के लिए मिलती है, या फिर जो शरणार्थी होते हैं वो बांग्लादेश में आते हैं, फिर बांग्लादेश से फिर भारत के अंदर आते हैं, तो उसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो जनसंख्या घनत्व है उसमें बदलाव देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से और इश्यू क्रिएट होते हैं। तो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि बांग्लादेश में कृषि और जल आधारित जो रोजगार है वो निरंतर चलते रहे, क्योंकि जो बांग्लादेश का पश्चिमी हिस्सा है उसकी बहुत बड़ी आबादी इस नदी के ऊपर निर्भर है, तो उसके रिगार्डिंग तनाव रहता है। तो उस चीज को किस तरह से सुलझाया जाए और क्या स्टेप लिए जाए उसके लिए, ताकि बाढ़ जैसी और समस्या उत्पन्न ना हो, बाढ़ और सूखा दोनों में से किसी प्रकार की। ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। कल्पनिता। धनी होने का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं है, वही श्रेष्ठ है जो सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है, जो ईमानदारी के रास्ते पर अड़िग है। विलियम एलरी। हाँ, तो इसमें तो वही यहाँ बोला गया है, जो अपने हम्म सिद्धांतों के विचारों पर अडिग रहता है वही सबसे श्रेष्ठ है। अगर किसी के पास धन है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो श्रेष्ठ है। जैसे हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जो अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो ही श्रेष्ठ है, बजाय अगर धनी से कंपैरिजन किया जाए तो। जैसे हाँ, यहाँ भारत का एथिक्स स्टेप। की बात हो रही है। हाँ, एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी, मॉरल प्रिंसिपल्स वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड उनसे डिटरमाइन होता है कि आप श्रेष्ठ हो कि नहीं। तो पैसा वो चीज डिटरमाइन नहीं करता है। हाँ, यहाँ भारत और चाइना का एग्जांपल लिया जा सकता है कि किस तरह से जो उनके नेबर कंट्री है उनको ट्रीट किया जाता है। जब हम चाइना के उसमें देखते हैं वहाँ ज्यादातर विवाद वाली स्थिति मिलती है, जब हम भारत के उसमें देखते हैं तो वहाँ देखते हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तीनों के में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो उसको सोल्व करता है, अपने जो सिद्धांत है उन पर रहता है हमेशा। ये साइंस को हम जीडीपी से कंपेयर कर सकते हैं। जो ये धन हो वाली बात है कि अगर आपकी जीडीपी ज्यादा भी है किसी कंट्री से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रेष्ठ कंट्री हो जाते हो। इट वुड डिपेंड अपॉन योर एथिक्स। और जैसे अगेन चाइना जो कंसर्न्स हैं हुवेवी के रिगार्डिंग कि प्रोडक्ट्स के अंदर इट माइट बी पॉसिबल सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं कुछ। ये नेपाल में जो भूकंप आया था उसके रिगार्डिंग कि 7.5 करोड़ की मदद दी जाएगी नेपाल को, ताकि जो भी वहाँ नुकसान हुआ है उसको फिर से क्रिएट किया जा सके, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो कर सके नेपाल। ठीक है। ये वो है कि जो वायुसेना से जुड़े हुए ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो भी उनके मेमोरियल है, या जो फोटो है या फाइल्स है, सभी को डिजिटली कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है इन्होंने प्रोजेक्ट मारुत। नो द पोस्ट पियर फॉर फ्यूचर। तो इसका नाम मारुत इसलिए रखा गया है क्योंकि जो वायुसेना का पहला स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस लड़ाकू विमान था उसका नाम था HF-24 मारुत, उसके नाम पर रखा गया है, ताकि उन्हें डिजिटली कन्वर्ट कर कर सेव रखा जा सके, ताकि जो लोग इतिहासकार है उनको उनके साक्ष्य मिल सके, और जो उसमें पढ़ने में रुचि रखते हैं उनको मिल सके, और उसके लिए रुझान बढ़ाया जा सके भारतीय सेना का भी और आम नागरिकों का भी उनके द्वारा। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में लाइन ऑफ नो कंट्रोल सो है वी कैन सी दैट वी कैन मेक आउट दैट it is depicting the Chief Minister of Delhi. So firstly, starting on this top left panel, recommend a book that helps me turn crisis into opportunity. So ये पूरा ED सामान जो उनको दिए गए हैं and he is not appearing in front of ED. So जो suggestion आता है कि read is the name of book. Read when life gives you summons. So ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ED समझ जो जा रहे हैं। धनियास की ऑथर कौन है? तो गेस द आंसर मिस्टर जम्पशिप। तो जम्पशिप बेसिकली यहाँ पे एक नोट कर रहा है कि अगर कोई चीज वर्क नहीं कर रही है तो बीच में छोड़ के भाग जाओ। तो उनका स्टेटमेंट भी आया था कि कल की उनको इलेक्शन से पहले अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस कॉनोटेशन में वी कैन से मिस्टर जम्पशिप उनको आंसर मिलता है
कि अगर काम नहीं कर रहा है तो that's why he is not appearing in front of ED. He is asking the reason of summoning. So that's how we can interpret this. औशक आपको और कुछ बोलना है इसमें? समन जो यहाँ पर आया था इट वाज फ्रॉम द ईडी आई थिंक इंडिया सीरियस। तो फिर तो बोला हुई तो ऑथर मिस्टर जमशेद, मतलब बोलना चाहिए कि एक डिफेक्शन कर सकते हो, जा सकते हो, उस तरफ जा सकते हो पॉलिटिकल पार्टी में, तो आपको बचा जाएगा, यही हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है। बताया। Okay. So in the courts mein we taken this up. Tamil Nadu governor can remove the minister only on the recommendation of the cabinet. So this is an important part which has been highlighted by the Supreme Court. And ठीक है, ये important है यहाँ पर. Then taking up this advertisement. So jute industry and importance of jute, which is again we can say part of green jute fibers हम बोल सकते हैं. तो Patsan Bhavan inaugurate hoga. So this is a big gift to the jute organizations, jute artisans and the farmers. So this would be also promoting our own tradition or own practices. Like आप देख सकते हो कि handbags हो सकते हैं जूट के, normal जो pen stands है वो बनाए जा सकते हैं, आर्टिक्राफ्ट में इसको यूज किया जा सकता है, फर्नीचर भी बनता है, and then यहाँ पे bags है, and इसके अलावा we also see these flower pots. So that's how इसके multiple uses भी हैं. सो फीचर्स ऑफ दिस भवन जो यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये कि दिस वुड बी अगेन हेडक्वार्टर्स ऑफिस ऑफ जूट कमिश्नर. तो वी आर हैविंग दिस डेडिकेटेड पोजीशन, नेशनल जूट बोर्ड एंड द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये दो इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स हो जाते, तो इनके लिए वी कैन फाइंड आउट सम मोर डिटेल्स ऑन दिस. Seamless service to the jute industry. We'll be having again a dedicated leadership होगा, एक they'll be having their own space building है, तो this would be helping more in terms of organized way of functioning of this entire industry. It would be direct help to the farmers, also to the workers, to their rights, and even for the grievance redressal. And welfare measures for the jute mill owners, their girl children, with better coordination, in-house jute design. So even startups and MSMEs and even self-help groups, they can also get boost. So achievements are also mentioned. So over 12,000 crore rupees worth of jute bags are being procured by central government every year. So this is important, highest ever MSP of the raw jute. And we can also look into what are again the climatic conditions important for the jute cultivation. And we can again boost the exports of jute. Jute diversified products exports more than rupees 1,500 crores. And training of jute diversification. तो ये important areas है. MSP, procurement, training, export, and welfare, and then the rights and grievance redressal. So this is an important article. Lead exposure. It caused millions to lose health. Removing it from petrol was a global achievement. So this becomes, we can say, very critical, you can say toxic chemical or toxic metal, we can say. So we've seen कि सबसे ज़्यादा impact consequences की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा children के ऊपर इसका impact होता है, and even on pregnant mothers also. So they are at great risk. Chances ये होते कि the children, they can lose the IQ, there can be loss of that, and there are then certain risk of autism, there is risk of asthma also. So ancient times we talk about कि how does it impact again other people, या we talk about how did यहाँ पे US के context में भी चीजें, so we're not taking that up. तो we see कि it is a toxic chemical since antiquity. तो ये recent problem नहीं है, since even ancient Roman times this is causing a problem. तो we have seen mine workers के context में this is a problem, the workers which are working in the metal smelting units. And from the 20th century we saw कि globally जो production of lead था that increased substantially. So after that we saw कि lead को even use किया जाता है in paints also, paints which are used for toys. So that is why it became a risk for the children also, and there were risk of coma also associated with this. And even today also this is a problem in terms of even recycling of the batteries. So the problem of lead is there, and even in when we talk about the
water pollution, the river water pollution also. So there is also lead contamination exists as a problem. Then talk about or kya apart from lead, what are the common toxic chemicals? So one is pesticides, which is again used in in agriculture. So that becomes a threat for the humans and the farmers. So here the problem is that it contains organophosphates. Then we talk about herbicides, which is used to kill weeds. That is second, can say common toxic chemical, which has glyphosate. This we discussed before also. Thirdly, we have asbestos. So asbestos ko hum mine karte, so that is why it is a problem. And since it is, we can say toxic, तो इसको हम यूज करते हैं in terms of you roofing the tiles in construction material. Asbestos is used in concrete pipes. So since it is durable, it is cheap, and it resists heat and fire, so that's why we go for asbestos mining. So these are some of the, you can say, more toxic chemicals which are there. Just we have discussed SEBI's regulation. GPS based toll हमने बात करी थी. Right now we are having RFID based जो टैग्स कार के आगे फ्रंट स्क्रीन पे लगाते विंड स्क्रीन पे. Now we'll be replacing that to coming up one next and higher stage of reform, GPS based toll. So you'll not be have to you'll not have to stop. So this would be saving the time. This would be reducing the logistics cost also. So the first one will be introduced between Delhi, Jaipur and Bengaluru E-way expressway for the first time. So we have started with its implementation also. So that's all in times of India. We can start with the conclusion. Divya, be specific. सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हमने बात की थी कि डीजी यात्रा करके थे जिसमें अब लॉगिन देखने के लिए मिला था उसमें बिना किसी कंसर्न के. तो उस रिगार्डिंग था कि आधार और पासपोर्ट की डिटेल्स है वो कहाँ होते हैं. तो डार्क पैटर्न के रिगार्डिंग किस तरह से उसको सोल्व किया जा सकता है. इसी तरह से हमने देखा था कि जिपडेट करके जो ई पोर्टल है वहाँ पर जो डाटा अवेलेबल है, जैसे जो बच्चे लॉस हो चुके हैं फिर उनके पेरेंट्स को कॉल करके उनसे एक अमाउंट ऑफ प्राइस यूपीआई के थ्रू लिया गया था. तो उसके रिगार्डिंग जो इश्यूज आ रहे हैं तो उनको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है. इसके लिए आईटी एक्ट 2002 और 2023 में न्यू आईटी एक्ट आएगा जो उसमें चेंजेस होगा उसके रिगार्डिंग देखा जा सकता है. उसके अलावा जो झारखंड साइबर क्राइम मॉडल है उसको अपनाया जा सकता है. हमने बात की थी आर्टिकल 136 की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो स्पेशल लीव पिटिशन अप्लाई कर सकता है जिसके थ्रू वो जो केसेस है जो हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके अलावा हमने बात की थी कि ईवीएम और वीवीपैट के रिगार्डिंग कि वीवीपैट को 2010 में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था नागालैंड के इलेक्शन में, या फिर जो उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए और के रिगार्डिंग चेक किया जाता है. इसके अलावा हमने बात की थी कि पंचायत से पार्लियामेंट तक की जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया यूएनडब्ल्यू जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उनके लिए, ताकि जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके. करुणा. First of all, we talked about Blue Navy in that terms, the incident that took place near Somalia. Then we talked about Central Zoo Authority, that is a statutory body under WPA 1972. And we also saw One Vihar National Park. Then we talked about polygraph test, that is a lie detector test, and also narcotic test in which sodium pentothal is used. Then we talked about डेप्सांग जो कि गलवान वैली के नॉर्थ में लोकेटेड है, एंड ऑल्सो डेमचौक जो कि लद्दाख में लोकेटेड है. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट पृथ्वी. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट Earth observation प्रोग्राम, दैट इज फॉर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसमें कि हम क्लाइमेट फोरकास्टिंग कर रहे हैं एंड सी रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं. उसके बाद we also talked about GIS mapping for the rural planning. Then in terms of health, we talked about the data that is WHO told us 1.27 million global deaths occurred in 2019 due to bacterial antimicrobial resistance. Thank you. Okay, thank you everyone. We will take up next newspaper tomorrow. Do Teamunsarkari.